the new Mercedes-Benz E-Class. इंडिया में ये E-Class का 5th जनरेशन है, इंटरनेशनल मार्केट में 10th जनरेशन है, V214 इसका कोड नेम है और इंडिया में E-Class जानी जाती है अपनी सेकेंड रो के लिए और इसीलिए इंडिया में ये आती है लॉन्ग व्हील बेस के साथ. I have done a detailed walk around of the new Mercedes-Benz E-Class. You can find that on NDTV Auto's YouTube channel. But now the big question is this E-Class more modern, more luxurious, and is this the luxury salon that you should be opting for? Well, that's what I'm here for. I will give you that answer. Keep watching. First, let's talk about the dimensions and looks. The new E-Class is 13 mm taller and the already long wheelbase has gone up by 15 mm. E-Class carries the elegant salon look. It gets the large grille with big Mercedes logo in the center, surrounded by smaller 3-pointed stars. The twin LED headlamp setup, a well-defined bumper area and a long bonnet gives the car a stately presence. On the side, the slightly curved shoulder line stretches from the headlamp to the tail lamp. You get flush door handles, 18-inch tastefully executed alloys, a redesigned rear door with a Maybach-inspired kink on the window line. Rear में immediately recognizable tri-star LED tail lamp है और rear bumper chrome में है. The boot is of decent size and gets hands-free access. नई E-Class में spare wheel floorboard के नीचे है, तो luggage space better है. E-Class का सही रिव्यू तो इसकी rear seat पर बैठकर ही हो सकता है. So I asked my colleague to drive me around. Seat itself is very comfortable and you can adjust the recline up to 36 degrees. You can even adjust the thigh support. You can increase it. The thigh support was not less by any standards, but you can increase it and sit absolutely comfortably. And though the leg room is quite nice, ये सीट मैंने बिल्कुल पीछे तक की हुई है, उसके बाद भी अच्छा खासा लेग रूम मुझे मिल रहा है. लेकिन अगर आपको और ज़्यादा लेग स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर ये बटन प्रेस करिए और इस सीट को आप कर सकते हैं पूरी तरह से आगे. ये मिलता है शॉपर पैकेज में. देन यहाँ पर सन ब्लाइंड्स भी पावर्ड हैं, तो आपको बस इसको ऊपर करना है और सन ब्लाइंड्स ऊपर हो जाएंगे. और साथ ही आपको रियर सन ब्लाइंड भी मिलता है एंड यहाँ पर 4 जोन AC मिल रहा है. आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. आगे जो इतनी सारी स्क्रीन्स आपको मिल रही हैं, यहाँ रियर सीट पर आपको कोई भी स्क्रीन नहीं मिल रही. इनफैक्ट आर्मरेस्ट में यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर तो मिल रहा है, लेकिन जो एक पैड होता था, एक यहाँ पर टैब मिलता था, वो आपको नहीं मिल रहा. यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपके पास और है और आपको टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं 2. बट एक अच्छी बात यह है कि आपके पास वॉइस कमांड है, तो आप यहाँ इस सीट पर बैठकर कुछ एक वॉइस कमांड दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हे मर्सिडीज, How can I help? ओपन सनरूफ. I'm opening the sunroof. इसको आपको यूज़ करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि कभी कभी ये यहाँ इस सीट से काम नहीं करता. फ्रंट सीट से जितनी बार भी मैंने कमांड दिया उतनी बार इसने सीमलेसली फॉलो किया है. अब एक अहम बात यह है कि ड्राइव के वक्त आपको कितना कंफर्ट मिल रहा है. तो इसका जो सस्पेंशन है वो स्टिफ साइड पर है, लेकिन अब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया है. तो इसका मतलब कि अगर आप ख़राब रोड से निकल रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि रोड ख़राब है, लेकिन वो जो बम्प्स वगैरह हैं वो आपको अंदर ज़्यादा फील नहीं होंगे क्योंकि गाड़ी अब्जॉर्ब उन बम्प्स को बहुत अच्छे से कर लेती है. और अच्छी बात ये भी है कि हम सुबह से इस गाड़ी को चला रहे हैं, कई हमने स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस किए और उन सभी स्पीड ब्रेकर्स को इसने काफ़ी आसानी से क्रॉस किया है. It's no air suspension, but Mercedes says they have worked on steel spring suspension with selective damping for Indian conditions and it shows. It's stiff enough to be stable on bumpy roads and still manages to keep the occupants comfortable. Though now, I want to be behind the steering wheels. Now before I start telling you about how does the new E-Class drives, let me first tell you about all the features you get here. You get a driver display which is customizable and can get all the important information right in front of your eyes. I do miss a heads-up display. You get a super screen and that means you get the infotainment screen and
individual screen for the passenger. And most of the magic has happened on these two screens. There are very few buttons here, including a button to manage the drive modes. Otherwise, everything is through this screen, including the air vents. Yes, you heard me right. You get digital air vents. That means you control the direction of the air vents through this screen. And there's a lot that you can do on this screen, including play games, but only when the car is stationary. You can connect that passenger screen to Bluetooth headphones and enjoy your own music or your own entertainment. Though I must say that I miss some of the buttons, especially the AC buttons. Controlling the AC while on the move through the screen, I have always found that very cumbersome. But the good thing is that AC menu is available on the touch of a button. And you can of course use voice command to manage many functions. You also get this leather wrapped steering, very nice to hold. You have these steering mounted controls and paddle shifters to give you better control of the car. सब जगह आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं लेदर रैप्ड है, पूरा डैशबोर्ड लेदर रैप्ड है और जो AC वेंट का एग्जीक्यूशन है वो मुझे बहुत ही नीट लगा. इनफैक्ट पूरा जो फ्रंट एरिया है, पूरा जो डैशबोर्ड एरिया है, ये बहुत ही नीटली एग्जीक्यूटेड लगता है. द इंटीरियर्स शो अटेंशन टू डिटेल एंड क्वालिटी इज टॉप क्लास. यहाँ सेंटर कंसोल एरिया में ये ओपन 4 वुड फिनिश दिया गया है और ये बहुत ही अच्छा इसका टच एंड फील है. और यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जर है यहाँ पर और थोड़ी सी जगह है जहाँ पर आप अपना की रख सकते हैं. इसके साथ ही आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको जगह मिल जाती है और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान रखा जा सकता है. रियर सीट्स तो कंफर्टेबल हैं ही, ये फ्रंट सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं और यहाँ पर अब ये कुशन भी मिलता है जो कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट देते हैं. मुझे ये लगता है कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो ड्राइवर है वो कोई ऑयल वगैरह लगाकर नहीं आ रहा है, अदरवाइज दीज कुशन्स विल गेट डर्टी. Well, there are brown and black color upholstery available too, but the interior upholstery color depends on the choice of exterior color, for which you have 5 options: grey, black, silver, white and blue. The front seats come with ventilation and heating function. And one very interesting bit that has been added to this car is this selfie camera. This is not just a selfie camera because it can also record video and can also help you attend your meetings. अगर आप Zoom कॉल लेना चाहते हैं, WebEx मीटिंग, Teams मीटिंग कुछ भी लेना चाहते हैं, आप इस कैमरे के ज़रिए कर सकते हैं. ड्राइवर साइड से भी की जा सकती है ये मीटिंग और पैसेंजर साइड से भी आप ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. और गाड़ी में अगर आप बैठकर फोटोज़ लेना चाहते हैं या फिर वीडियोज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है. आपको उसको सेव करने के लिए USB ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी. तो आप जो रूट्स फॉलो करते हैं हर रोज़ वो ये गाड़ी लर्न करेगी. सपोज़ आप रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑफिस जाते हैं, द कार विल लर्न दैट रूट और आपको वो नेविगेशन प्रॉम्प्ट आएगा. आपको उस वक्त की जो सेटिंग्स पसंद हैं उसके प्रॉम्प्ट्स भी आ जाएंगे. So a lot has been done in making sure this car preempts what you want. Now let's talk about the drive. So आपके पास 3 engine choices हैं. M254 4-cylinder petrol engine on E200, OM654M 4-cylinder diesel engine on E220D, both of which have a 48-volt on-board electrical system with integrated starter alternator. The engines are paired with 9-speed torque converter automatic. The petrol engine produces 204 HP power and 320 Nm torque, while the diesel engine produces max power of 197 HP and a torque of 450 Nm. The mild hybrid system also generates additional torque of 205 Nm. Very soon, Mercedes will bring the E454 Matic 2, which is what you should opt for if you want all the luxury with performance. The E454 Matic is powered by 6-cylinder inline petrol engine producing 381 HP and 500 Nm and does 0 to 100 in claimed 4.5 seconds. In contrast, the car I'm driving today, the E200, does the run in 7.5 seconds. Now, E200. It's not so much performance oriented, it is more oriented towards giving you a comfortable ride. तो इसमें जो power delivery है वो
काफ़ी लीनियर है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स मोड में भी इसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं, कंफर्ट, इको और साथ ही स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में भी थोड़ा सा वक्त लगता है इसको डाउनशिफ्ट होने में और उसके बाद भी पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर रहती है। So clearly the focus is more on giving the passengers comfort and a very smooth drive. Though I must say it's not slow, just the delivery of power is at an even pace. And the shifts are quick and on point. So if you want to have a little bit of fun, it's better to use these paddle shifters. The car feels planted to the ground and the steering response is great. It adds weight and feels quite precise as you gain speed. और इंडियन कंडीशंस में स्पेशली जब आप शहर में चला रहे होते हैं तो ये एडास कभी कभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देता है क्योंकि इतनी सारी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस होती हैं. बट इन दिस न्यू E-Class you also get ADAS functionality in E-Class. And you know how Indian conditions are, especially city conditions, जहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है. कभी भी आपके सामने कोई साइकिल वाला आ जाएगा, बाइक वाला आ जाएगा और तब जो अगर आपने एक्टिव ब्रेक असिस्ट ऑन करके रखा है तो जो ब्रेकिंग होती है वो बहुत शार्प होती है. आप उसे ऑफ कर सकते हैं और इस बार अच्छी बात यह है that if you switch it off, this car will remember it and the next time you drive it, it will remain switched off. पहले मर्सिडीज़ की गाड़ियों में आपको हर बार उसे स्विच ऑफ करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. द कार विल रिमेंबर योर सेटिंग्स, बट ऑफ कोर्स you should use these settings with caution. After all, ADAS is there for our safety too. While the cabin is quiet and you cannot hear either a road noise or the wind noise or ambient noise, you will hear a little bit of engine noise when you push the car. The E200 was launched at Rs 78.5 lakhs, while the E220D at Rs 81.5 lakhs and the E450 at 92.5 lakhs. The starting price is very close to the outgoing model and around 5 lakhs more expensive than the recently launched BMW Long Wheelbase 5 Series. But the new E-Class offers a lot more in terms of features and tech. The brand E-Class itself has a lot of value. So in this segment, if you are looking for a comfort-oriented, tech-packed luxury salon, E-Class must be considered.